Hello, my name is Monika. I'm an actor. Right now, I'm holding this award. It's Breakout Star, STARmeter Award from IMDb. I think this is a very special award because this is my first award as an actor. That too, it's like a fan-driven award. So I think I can totally rely on you because all the love you have given to our show Khauf. I'm really very glad that they feel connected with the character, with the show Khauf, and they are giving such tremendous love to the show. So thank you so much for this thing. You got a video call from Aamir Khan after your first web series. How did you feel in that moment? So the thing was he texted, okay? तो जब उन्होंने टेक्स्ट किया तो पहले तो मुझे लगा कि कोई स्कैम कर रहा है मेरे साथ. सो आई वाज लाइक हाँ आमिर खान. तो मुझे एंड इट्स वेरी मोटिवेटिंग सिचुएशन ऑल्सो कि अगर कोई फ्रेंड आपको ये स्कैम कर रहा है और आपने बोल दिया आमिर सर दिस डेट और फिर बाद में पता चले कि वो नहीं है, तो आई वॉज वेरी रूड. आई वाज लाइक डोंट डू दिस थिंग विद मी. फिर उनका फिर से मैसेज आया, नो मोनिका दिस इज़ आमिर खान. और फिर जो उनकी मैसेज का इंटेंसिटी था तो मुझे लग गया कि नो नो दिस इज़ आमिर खान. और मैं उस दिन पूरा दिन कम्प्लीटली फ्री थी, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि टेल मी आप कब फ्री हो, विल कनेक्ट देन. मैं पूरा दिन फ्री थी, लेकिन मैंने उनको बोला सर इफ़ वी कैन कनेक्ट टुमारो आई एम फ्री एट लाइक 2 PM. ही इज़ लाइक ओके. एंड वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि थ्रू आउट मतलब पूरा रात आई वॉजंट एबल टू स्लीप. आई वॉज जस्ट लाइक थिंकिंग कि इमेजिनरी वो क्या पूछेंगे, फिर मैं क्या बोलूँगी. यू शुड नेवर डू दैट. अगर आपको कोई एक्टर बोल रहा है कि मतलब लेट्स कनेक्ट, सो कनेक्ट राइट नाउ. सो फिर दूसरे दिन वी हैड अ चैट एंड इट वॉज वंडरफुल यार. वो अलग बात है कि उन्होंने बहुत कुछ बोला. वी टॉक फॉर लाइक आई थिंक हाफ एन आवर और मैंने सिर्फ ऐसे हाँ करके मुंडी हिलाई. थ्रू आउट आई वॉज थिंकिंग ओ गॉड आई एम टॉकिंग विद मिस्टर आमिर खान. बट इट्स अमेजिंग. आई मीन उन्होंने एक चीज़ बोली थी. एक होता है जब आप किसी के इश्क में होते हो, आदमी इश्क में होता है ना, उसका खुद पे ज़्यादा ध्यान रहता है कि मैं कैसे दिख रहा हूँ. एक तो वो वाला एक्टर है. फिर एक होता है आशिक का खुद पे ध्यान नहीं होता है, उसका जिससे उसको आशिकी है उस पे ध्यान होता है. तो ये एक्टर होता है जिसका खुद पे ध्यान नहीं, अपने सिर्फ को एक्टर पे ध्यान है. सो ही वाज लाइक कि व्हेन आई सॉ योर वर्क, सो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारा ध्यान खुद पे नहीं है, आपका ध्यान आपके को एक्टर में होना चाहिए बिकॉज सीन उस तरीके से काम करेगा. सो आई थिंक दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो अभी भी वेन एवर आई लाइक गो फॉर अ प्रोजेक्ट और समथिंग, ये मेरे दिमाग में रहता है, बी आशिक, को एक्टर पे ध्यान दो. How was your first day at National School of Drama? My God, yeah, where are you taking me, guys? When I entered the school, it was almost like going to some different planet, you know. I think जब आप किसी भी space में enter होते हो, it's all about the energy. और जब आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जैसे ही गेट क्रॉस करते हो ना, आप इस साइड से वहाँ जाते हो, सो वहाँ की जो एनर्जी है ना, इट्स अ फ्री विल थिंग. इट्स लाइक रेबल विदाउट अ कॉज, यू नो. You are here to construct, deconstruct, you will create, you will destroy. That's the energy of that place. And I was like, I'm not in Delhi. What is this place? That was amazing. Yeah? Was there a specific moment on the sets of Khauf that creeped you out? People always think that कि अगर आप horror show कर रहे हो ना, क्योंकि मैं भी ऐसा सोचती थी कि यार मतलब I want to know the anecdotes about them being on set, you know. But the main thing is sometimes it's very funny. क्योंकि जो भूत आपके सामने खड़ा है वो ग्रीन क्रोमा पहन के खड़ा है, एंड देन यू हैव टू रिएक्ट एंड गिव दोज वेरी ऑथेंटिक रिएक्शन कि आपने सच में कुछ देख लिया. एंड इनफैक्ट ही इज़ लुकिंग लाइक अ जोकर इन फ्रंट ऑफ यू. सो दोज आर द मोमेंट्स जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्टिंग करनी पड़ती थी. बट आई थिंक आवर प्रोडक्शन डिज़ाइनर हैज़ डन सच अ फैब जॉब कि वो जो कॉरिडोर्स थे, वो जो हॉलवेज थे, इट गिव्स यू दैट काइंड ऑफ ईयरी फीलिंग, यू नो. सो इट फील्स वेरी सफोकेटेड. सो एज एन एक्टर आपका आई थिंक काम थोड़ा सा कम हो जाता है बिकॉज यू आर गेटिंग ऑल दिस काइंड ऑफ सराउंडिंग्स एंड एवरीथिंग. सो या इट वॉज फन. या बट Which was your most stressful day on the sets of Khauf? आई थिंक सिर्फ मेरे साथ नहीं, सबके साथ ऑलमोस्ट. व्हेन वी वर शूटिंग द क्लाइमैक्स, द 8th एपिसोड वाले में, इट वाज वेरी इंटेंस. द होल जहाँ पे मधु को बेड से टाई किया हुआ है, दैट होल सीन, एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ स्टंट्स आल्सो, यू नो, जहाँ पे हार्नेस के साथ यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ स्टफ एंड एवरीथिंग. दैट डे वाज क्वाइट हेक्टिक. एंड द स्लज सीन आल्सो, ओ माय गॉड, इट वाजंट लाइक इमोशनली वो ज़्यादा वो नहीं था, बट फिजिकली इट वाज बैड. इट वाज रियली बैड जो पूरा स्लज सीन था. सो आई वाज लाइक ओके, व्हेन आर वी फिनिशिंग दिस वन? How do you reset after an intense day of shoot? आफ्टर शूटिंग समथिंग आई जस्ट प्रेफर कि मुझे अपने क्रू का कोई ना दिखे. सो लाइक व्हेन वी आर गोइंग बैक टू होटल ऑल्सो आई एम लाइक आई डोंट लुक अपवर्ड सो दैट मुझे किसी को हाई भी ना बोलना पड़े. सो इट्स लाइक आई गो नम एंड गो साइलेंट सो दैट आई कैन प्रिपेयर फॉर लाइक अ नेक्स्ट डे.
Otherwise, I just cannot do it like chatting, going back to hotel, chatting again, and then coming. I cannot do that. So that's how I need to charge myself by going silent. When did you realize you wanted to pursue acting full time? I was in Chandigarh. I was doing my graduation, and one of my friend at that time वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड सिनेमा देखता था. So he was like कि watch Godfather. Godfather देखने से पहले remember मैंने कोई भी मतलब फिल्म देखा ही नहीं है. मतलब अपना बॉलीवुड छोड़ के मैंने कोई भी फिल्म नहीं देखा है. I watched Godfather. The craziest part is मुझे वो फिल्म समझ ही नहीं आई. So I was like what is this going on? What struck me was कि मुझे फिल्म समझ नहीं आई but it affected me. So I was like ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो ये मुझे कैसे affect हो रहा है. So वहाँ से I started asking question कि okay there is something deeper and profounder, they are doing something जिसका मुझे इल्म नहीं है. वहाँ से I thought कि okay I want to learn acting and I think that I can pursue only in if I'll go in like a theatre वाले thing में. But yeah, Godfather helped me in like at least giving me that way कि you cannot go or come to Bombay like with bare hands. You have to have like your own repertoire and your own skills. How did your theatre background support your journey into movies? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी भी एक्टिंग में अगर आपको और गहराई में जाना है ना, एक आपको नॉट बिगर बट मोर डीपर, सो यू हैव टू कम ऑन स्टेज. बिकॉज ऑन स्टेज नो मैटर हाउ लवली, how beautiful you look, if you're not a good performer, your audience will hate you in like 5 or 6 seconds. So I think that is the real test of an actor जब वो stage में खड़ा होता है and there's no BGM, no camera, close up, close out, nothing is there and you are just there. And the second thing जो अभी भी helps me is the repetition. I mean movies में सब लोगों का प्रोसेस अलग होता है बट पीपल ऑलवेज गेट फ्रीक आउट कि यार ज़्यादा प्रिपेयर मत करो, ज़्यादा मत करो. बट थिएटर में आप 2 महीने पहले से एक ही लाइन को बार बार इट्स द रेपिटेशन एंड आई थिंक दैट रेपिटेशन मेक्स यू स्पॉन्टेनियस. जो लोगों को लगता है कि स्पॉन्टेनियस आई विल नॉट प्रिपेयर सो आई विल बी स्पॉन्टेनियस, बट आई थिंक इट्स द ऑपोजिट. यू हैव टू प्रिपेयर दैट मच सो दैट यू कैन बी स्पॉन्टेनियस ऑन सेट. If you could be a part of any horror film, which one would you choose? I've recently watched, I think, Hitchcock's का Psycho, Norman Bates. I don't know, मतलब आपको gender change करना पड़ेगा. I'll be Miss Bates then. So I think that I love that film. Yeah, I love that film. Polanski का Rosemary's Baby. You know what? I think every actor should do not like a typical horror, but a psychological horror because it's like a great opportunity for actor. Because जब आप कोई psychological horror करते हो ना, there is a great scope as an actor to showcase your skill because there's a lot on script and you'll get like a bigger journey, deeper journey. So वो play करने में बहुत मजा आता है. Have you ever had a spooky experience that you'd like to share with us? हमारे ही सोसाइटी में एक लड़की थी तो उसको ये होता था, वो मोस्ट ऑफ द टाइम सही रहती थी लेकिन जब होली आती थी ना, आई डोंट नो, वो कलर से बहुत ज़्यादा डरती थी. सो उस टाइम पे उसका ये होता था कि वो अपने को रूम में बंद कर लेगी, शी विल नॉट ओपन द डोर, नथिंग. तो जब हम उसके, बिकॉज हमको स्टार्टिंग में लगता था कि यार ये हम लोगों को थोड़ा सा डरा रही है, कुछ ऐसा कर रही है, बट जब हम लोग ऐसे खटखटाते थे दरवाजे में तो फिर वो हम उसको विंडो से देखते थे. सो आई मीन यू कैन सी दैट गर्ल सिटिंग देयर बट देयर इज समथिंग डिफरेंट. आई मीन वो ऐसे फेस ऊपर करके देखती थी एंड विद द आईज एंड इट्स टोटली डिफरेंट. आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट. फिर वो खुद सही हो जाती थी ऑटोमेटिकली. आई डोंट नो, मतलब वो मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं था, उसको काफ़ी जगह लेके भी गए बट फिर वो आई थिंक सही हो गई थी शायद से. Tell us 3 directors you really want to work with someday. आई थिंक आमिर सर, I want to work with him, I want to collaborate with him. मतलब चाहे वो as a director भी अगर काम नहीं कर रहे हैं, but अगर if somehow in whatever aspect he is like associate with the film or a show, one Aamir sir and then Lizo Pellissieri, I just love him. He's one of my favorite director from India. And Payal Kapadia, yeah, Payal Kapadia. Which 3 actors do you really want to work with? Fahd Fazil, that's it. So Fahd Fazil is also born on like 8th of August. I'm also 8th of August. So yeah. Which 5 films do you think should be on everyone's IMDb watch list? जो अभी आप मेरे दिमाग में पॉप आउट नहीं होगा फिल्म, सो आई विल बी वेरी गिल्टी घर जाके, यार ये क्यों नहीं बोला, ये फिल्म मैंने कैसे छोड़ दी. बट आई विल ट्राई. कुंभलंगी नाइट्स. You know why I have said this film?
क्योंकि in some films if you'll watch mostly you watch that for an actor, sometimes you watch that for a cinematographer, you know, like Manjumal Boys. Then कुछ फिल्में होती हैं जो all together सारे डिपार्टमेंट का इतना फिट बैठती है with the actor, with I mean the whole team is there. So I think Kumbalangi Night is one of them. आप स्टोरी से लेके you can see the actor, you can see the cinematographer, everyone is shining in that film. Bandit Queen, चेतन आनंद हीर रांझा, एक और हीर रांझा है, आई थिंक नॉट दैट वन, चेतन आनंद का हीर रांझा, कैपरनाम and Triangle of Sadness, Robin Ostlund's Triangle of Sadness. Can you tell us something about your future projects? I think I cannot name the project, but मेरा जो next project आएगा, it will be with अनुराग कश्यप. अनुराग सर मेरे लिस्ट में थे, बट अभी वो लास्ट ईयर कट हो गया है, सो या द फिल्म विल बी विद अनुराग सर. थैंक यू सो मच गाइज. IMDb, आई हैड लाइक सच अ ग्रेट टाइम सिटिंग हियर, एंड पर्सनली आई डोंट लाइक गिविंग इंटरव्यूज, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, बट आप लोगों के साथ इट जस्ट फील्स लाइक गोइंग बैक टू दोज मोमेंट्स अगेन, यू नो, and just talking about your feelings and all the memories. And to all the people out there, अगर आपने अभी तक खौफ नहीं देखा है, so please watch खौफ and share your reviews on IMDb.